Imagineering brighter futures with smarter steels. ArcelorMittal, Nippon Steel India. Smarter steels, brighter futures. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharti Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Volkswagen Tiguan, India's safest SUVW. Volkswagen. Yeah, Ajay, look at your dad. Will we be the same at his age? Absolutely yes, if we plan our future like him. How? My father had invested in LIC's Jeevan Akshay, which gives immediate and guaranteed annuity at regular intervals, that too for life. Wow. But do we have to wait until his age? Absolutely not. We recently invested in LIC's new Jeevan Shanti, which gives deferred annuity, which means regular income after some years. I see. LIC. LIC's annuity plans give 10 annuity options and flexibility in receiving regular income. LIC, हर पल आपके साथ. .2% across India, 35% across English markets, 46% across super prime time, 43% across urban India. Channels that spend crores lose to content. Content wins, landing loses. Republic, the All India #1. Powered by Truecaller, बुरी नियत वालों का कॉल लाल. Ladies and gentlemen, you expected the puzzle, but for a law person, this is not a game. Explain it to us, detective. Always! Everyone is in danger. All right, when's the murder mystery start? With Beto's Diabetes Care Program, you get online doctor consultations, all your prescribed medicines and dietitian support on call. Get your complete diabetes management kit and expert advice with Beto's Diabetes Care Program. Give a missed call on 740-1100. क्या हुआ रोहन? क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में?
भैया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Inspired by our today, we design your tomorrow. Some said electric is the future. We said, why stop there? At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us. Good afternoon. You're watching live and breaking on Republic TV. I'm Nupur Talwar Suri. We take a quick look at the top headlines we're tracking here at noon on Republic. After outrage, tainted titler is forced to withdraw from the Bharat Jodo Yatra. As he is forced to withdraw from the Yatra, Republic TV is the only channel to confront him. The Prime Minister bats for the mask mandate from the national capital to Karnataka. India is on COVID alert. Crucial health ministers meeting with state health ministers' guidelines to be issued for states. Bharat Biotech's nasal vaccine gets the nod from the health ministry. And Tamil Nadu's BJP Vice President Sasikala's car and home are vandalized. The BJP alleges a DMK role. And lodged in a jail in Kathmandu since 2003, linked to over 40 murders, the bikini killer Charles Sobhraj will be walking free. Well, our top story this hour, of course, is the alert that's been sounded across the country as far as COVID-19 is concerned. Now, according to the Health Ministry, on Tuesday, a mock drill will be conducted in all hospitals across the country, and the same mock drill will also be conducted by the state health ministers in each state. It is also being said that in today's meeting with the health ministers at 3 o'clock this afternoon, a set of guidelines will be issued through various states. The health ministry sources have also confirmed that masks will not be mandatory, but there will be strict guidelines for public gatherings. So a set of new guidelines likely to be issued. We are given to understand that even as all of this happens, of course, the Bharat Biotech nasal vaccine has also been approved by the Health Ministry. Now, we are told that there is a meeting at about 3 o'clock this afternoon between the Health Minister Mansukh Mandaviya and also health ministers of various states, where the union government is likely to advise the states in terms of preparedness as well as emergency protocols that need to be put into place. Several states, of course, have suo motu taken action already. We saw Punjab yesterday issuing guidelines that everybody who comes to government hospitals with fever needs to get an RT-PCR test done. There are other guidelines that are also in place in terms of masks. Reports coming in that states are asking people to start masking up even as there is a COVID surge in various countries across the world. Let's listen in fact, to Gursimran's report that he filed outside a hospital.
Right now we are at the MCH Hospital Jammu, which is one of the successful facility when it comes to tackling the COVID-19 pandemic, and here the arrangements are being given a final look. The senior doctors are having a closer look and they are now inspecting the arrangements. I am joined by Dr. Arun Sharma, who is the medical superintendent of the hospital. Sir, किस तरह की preparations हैं यहाँ पे, क्योंकि अब final touch दिया जा रहा है, 27 को कहा जा रहा है मेगा इंडिया ड्रिल भी होगी, उससे पहले जो जम्मू कश्मीर में फाइनलाइज चीज़ें हो रही। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि हम लोग ऑलरेडी जो है रिहर्सल जो है कर 2 साल से जो है कोविड को जूझ रहे हैं और उनके पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। 17 अप्रैल 2020 में फर्स्ट हमारा जो केस यहाँ पे आया था, जनरल पेशेंट आया था, तब होम क्वारंटाइन नहीं था, तो फ्रॉम दैट टाइम आस्ता आस्ता हमारा जो हम इक्विपमेंट होते गए। आज की डेट में हमारे 200 बेड जो है, ऑल 200 बेड्स हैव गॉट ऑक्सीजन पॉइंट्स। उसके अलावा हमारे पास सेपरेट ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं हर कैपेसिटी का, 5 लीटर का भी है, 10 का भी है, 20 का भी है। वी हैव गॉट मॉनिटर्स ऑन ऑल द बेड्स, सारे बेड्स पे हमारे मॉनिटर्स आप देख सकते हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं जो हर बेड पे लगे हुए हैं, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे कोई हमारा वार्ड जो है ऑलमोस्ट आईसीयू की तरह पूरा वार्ड है। वी आर प्रिपेयर्ड, वी हैव सीन फर्स्ट वेव, सेकंड वेव जो बड़ी टफ थी, देन थर्ड वेव ऑल्सो। तो अब अभी केसेस अगर आते हैं तो वी कैन मैनेज दम प्रॉपर्ली, ऐसी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटी है, 200 बेड्स की आपकी कैपेसिटी जो है, मैक्सिमम आप जा सकते हैं, तो किस तरह से सर चीज़ें टैकल की गई हैं? क्योंकि परसों एक मीटिंग भी हुई थी हाई लेवल जिसमें कि मैन पावर को लेकर भी डिस्कस हुआ कि किस तरह अगर पॉसिबल वेव आती है तो उसको टैकल करना। हमारा जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल कोविड था मार्च 2022 तक, अब उसके बाद हमने अब नॉन कोविड भी शुरू किया है, पर हमारी जो स्पेशलिटी है मैटर्निटी एंड चाइल्ड है, तो ये डेजिग्नेट किया गया है जम्मू डिवीज़न में कोई भी मैटर्निटी, अगर किसी की सिजेरियन होना है, नॉर्मल डिलीवरी होनी है, वो सब के सब यहाँ पे की जाएंगी। एंड उसके अलावा बच्चा, कोई भी बच्चा कोविड पॉजिटिव हो तो वो यहाँ रखा जाएगा। प्लस एक एडेड एडवांटेज है कि हमारे पास ऑपरेशन थिएटर्स जो 4 हैं, कोविड सर्जरी, किसी किस्म की भी कोविड सर्जरी, चाहे वो सर्जरी हो, ENT हो, आई हो, कोई भी स्पेशलिटी हो, तो दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन दिस हॉस्पिटल। All right. What we are given to understand is that Jammu and Kashmir, of course, is ramping up for COVID preparedness. We're also hearing right now that several states are beginning to prepare for any eventuality. Well, cutting across to news that's just coming in, we are now learning that a blast has been heard in Islamabad's I-10/4 sector on Friday morning. This is as per television reports that we are just getting. The nature of the explosion is not clear at the moment, but local TV channels have reported that the police have confirmed that a blast had been reported outside a clinic in Sector I of Islamabad, and that there have been casualties. This is just preliminary information that we are getting right now, but we are going to try and get more details as to what happened. But for the moment, we are given to understand that there has been an explosion in Islamabad. The explosion was reported this morning. Now, according to local TV channel reports, there have been casualties in this explosion that have been reported. Of course, information is just trickling in, but we can see the remains of what appears to be a blast that took place earlier this morning. Now, some reports seem to suggest that there have been casualties in this blast that was reported from Islamabad. So, a blast reported from Islamabad's I-10/4 sector. The nature of the explosion, of course, is not clear at the moment, and some news reports suggest that the blast did take place outside a clinic in that sector, and that there have been casualties. Pictures on your screen are of the fire that resulted from the blast. We are still trying to get more details on what really happened. But we are learning that local security forces have already rushed to this spot, and this appears to be an upscale neighborhood of Islamabad, is what we are learning right now. We are still trying to get more information as to what happened, but initial details that are coming in seem to suggest that this was a blast that took place in the Sector I of Islamabad. It happened outside a clinic, is what we are learning right now, and that
The nature of the explosion, of course, is still not known. Just to tell our viewers that this is news that's just coming in. We're still trying to get more details as to what happened, but local TV channels are reporting that a blast took place in an upscale area in Islamabad and that there have been casualties that happened. All right, so here's what we know so far. The blast took place earlier this morning is what we are told. We don't know the number of casualties yet, but some news reports that are just trickling in seem to suggest that there have been casualties in this blast. It has taken place in an upscale neighborhood in Islamabad, and some information seems to point to the fact that it took place outside a clinic, but we are still trying to gather more details as to what happened. Well, news just coming in. The Bombay High Court has granted bail to a dismissed Mumbai cop Riazuddin Qazi, who was arrested in the Antilla bomb scare case of 2021 by the NIA. So bail being granted by the Bombay High Court in the Antilla bomb scare case. Riazuddin Qazi has been granted bail. So we are given to understand that the Bombay High Court granted bail to the dismissed Mumbai cop Riazuddin Qazi in the Antilla bomb scare case. Qazi is the second accused in the case to get bail. Sandeep has more details on this. Sandeep, good afternoon. We are learning that bail has been granted to him on furnishing a surety of 25,000 rupees, and there are also a few conditions. Yes, the Bombay High Court has remember he was arrested in the Antilla bomb. All right, so that's a poor audio connection that we have with Sandeep over there, but here's what's coming in so far. The Bombay High Court has granted bail to the dismissed Mumbai cop Riazuddin Qazi, who's been behind bars in the Antilla bomb scare case. Qazi is the second accused in this case to get bail. The bench pronounced the order a while ago. Now, we are given to understand that he has been granted bail on furnishing surety of 25,000 rupees, and there are also a few other conditions that have been imposed by the court. Do remember that he was one of the two people who has been accused in this case. He was, of course, dismissed by the Mumbai police as well. Just to tell our viewers about what had happened, a gelatin-laden vehicle was found outside industrialist Mukesh Ambani's residence, Antilla, in February of 2021. The investigation in the case was later handed over to the NIA, which had dated that this entire planning of gelatin sticks was a threat note, which was led, in fact, by Mumbai's police officials. The dismissed Mumbai cop Sachin Vaze Qazi was Vaze's colleague at the time, and it was alleged that he was only following Vaze's orders. Now, there are a total 10 accused in this case, and earlier the trial court had granted bail to another accused, Naresh Kaur. I'm going to try and go back across to our correspondents to get more details on this. I think Samiksha is also joining us right now from the Mumbai news desk. So, Samiksha, give us more details in terms of what's happened. All right, yes, the big coming in this hour in the Antilla case, Bombay High Court has granted bail to the dismissed cop Riazuddin Qazi. In fact, we have that soundbite coming in from the lawyer at this point. Let's just play out that soundbite of the lawyer. All right, so let's in fact play out what Hasnain Qazi, the advocate for Riazuddin Qazi, has said. क्लाइंट है एंटिला मामले में गिरफ्तार थे आज उनको कोर्ट में क्या हुआ सुनवाई थी कोर्ट में 2 दिसंबर को आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हुए थे
और कंप्लीट होने के बाद में मैटर्स को रिजर्व किया था फॉर ऑर्डर्स एंड नाउ द कोर्ट प्रोनाउंस दैट द बेल एनआईए एप्लीकेशन मींस अपील वाज अलाउड मींस मेरे क्लाइंट को बेल मिल चुकी है इसका मतलब ये होता है सर नाम बता देंगे कब से गिरफ्तार थे क्या पूरा मामला था कितना कोर्ट में क्या कुछ कितने बॉन्ड गिरफ्तार नहीं आर्ग्यूमेंट्स तो हम लोग ने ये कहा था कि दिस इज अवेलेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 120B कॉन्स्पिरेसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस विच आर अवेलेबल ऑफेंसेस तो हम लोग को तो एज अ मैटर ऑफ राइट बेल मिलना ही चाहिए था लोअर कोर्ट से बट समहाउ बेल नहीं मिली तो हम लोग वी फाइल एन अपील बिफोर दिस कोर्ट एंड वी गॉट द बेल क्या क्या कंडीशन रखा कोर्ट ने बेल देते टाइम कंडीशंस तो वो ऑर्डर आने के बाद में पता चलेंगी पहली बात तो 25,000 के श्योरिटीज पे हमको रिलीज करने बोले और सम डेज के ऊपर हम लोग को विजिट करना होंगे एनआई ऑफिस Well, let's go across to Sandeep, who's reporting on this. Sandeep, give us more details of what happened in court. We are given to understand that he's, of course, the second accused who's been granted bail. So yes, Riazuddin Qazi, who was in fact an associate of Sachin Waze. Remember, he was he was the officer deputed in CIU, and that is the department which was led by API Sachin Waze. And remember, he had the allegations of hampering the evidences, and in fact, in the Antalya bomb scare case. So he was working on the orders of Sachin Waze, and for the same reason, he was also the part of the conspiracy. So the charges like 120B was in fact pressed against him, although the lower court, the NIA court had denied bail to Riazuddin Qazi, but now he has been given bail by the Bombay High Court, stating that on the surety of 25,000. Apart from that, he has to also submit his passport to NIA, and also he has to be present on every Saturday. So these are the conditions that has been in fact kept these are the condition for which he has been in fact given bail by the Bombay High Court. All right. All right, Sandeep, of course, is bringing us all those details of what happened. So, Riazuddin Qazi, one of the dismissed cops in this Antalya bomb scare, has been granted bail. And here's a look at what else is making news this afternoon. The NIA conducted raids across Jammu and Kashmir. Over a dozen locations were raided in connection with the terror funding and support to terror infrastructure in Kashmir. BSF troops have foiled another drone intrusion in Amritsar, Punjab. BSF troops shot down the drone, which has now been seized. The search is on for contraband or weapons that were dropped using the drone. Farmers staged a protest in Punjab's Firozpur area. 10 farmer leaders were booked for electricity theft during the protest outside the liquor factory. Police has also registered an FIR against them for using electricity illegally. The National Commission for Protection of Child Rights has summoned EdTech Byju's CEO Ravindran over allegations that the company is indulging in malpractices to lure parents and children to buy their courses. The Apex Child Rights body has asked Ravindran to appear in person today over the alleged malpractice of hard selling and mis-selling of Byju's course for students. The BRS will be holding a Mahadharna in all district headquarters today, protesting against the centre's anti-farmer policies. K. Kavita has alleged that the BJP government at the centre is forcing Telangana government to take back schemes under Manrega. India's ambassador to Russia, Pavan Kapoor, has addressed the plenary session of India-Russia Business Forum organised by the India Business Alliance in Moscow. He stressed on the need for businesses on both sides to understand and utilise new opportunities, and batted for international north-south transport corridor and eastern maritime corridor. Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the UN, spoke out in support of peace
security and prosperity. She said that India does not hesitate in raising its voice against the common enemy of humanity, such as terrorism, in the wrap-up session as India is set to exit the UNSC after a 2-year term. During the last 2 years, we spoke out in support of peace, security and prosperity. We did not hesitate in raising our voice against the common enemies of humanity, such as terrorism. We were conscious that when we spoke in the Security Council, we were speaking on behalf of 1.4 billion Indians, or 1/6 of humanity. Well, Jagdish Thaikla has withdrawn from the Bharat Jodo Yatra of the Congress party. Sources claim that the Congress leader may have skipped the Delhi leg of the Yatra to avoid controversy. The BJP State Vice President Shashikala Pushpa has been booked by the Thoothukudi police station under 3 sections of the IPC. The DMK had filed a complaint in the police station against the BJP leader for verbally abusing a minister and also for issuing death threats against him at a recent public event. Months after Kanhaiya Lal was brutally murdered in the Udaipur district of Rajasthan, the National Investigation Team has filed a charge sheet against 2 Pakistani nationals in connection with the case. Investigations have revealed that the accused people operated as a terror gang. All right, now Republic TV has managed to access the Nepal top court's order that has asked for the release of Charles Sobhraj on grounds that he has already served quite 2/3, I think, of the sentence that he was supposed to serve. Also, we're now getting first pictures of Charles Sobhraj post the Supreme Court of Nepal ordered for his release. So pictures on your screen are of Charles Sobhraj, who will be walking free. He's, of course, linked with about 40 murders, including some of those of backpackers. Let's go across to Anamika Pandey. She has more details on this. So, Anamika, good afternoon. Pictures on our screen, of course, that have been accessed by Republic TV show Charles Sobhraj as he's going to be released from prison. Anamika, can you hear me? हाँ नुपुर, मैं आपको सुन पा रही हूँ। अभी बस थोड़ी देर का वक्त हुआ है, करीब 5 से 10 मिनट पहले चार्ल्स सोबराज को यहाँ सेंट्रल जेल से सीधे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अपने साथ लेकर गए हैं अपनी कस्टडी में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी नेपाल पुलिस ये नहीं चाहती है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने इतने मर्डर किए हैं, जिसके ऊपर इतने सारे आरोप है, किसी एक देश में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में, उस शख्स को खुला इस तरह से छोड़ा जाए। इसीलिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अपने साथ लेकर गया है और वहां पर फ्रांस का जो पेपर वर्क है, उसका वीजा या वो तमाम चीजें वो जब पेपर वर्क हो जाएगा करीब 4 से 5 दिनों में, उसके बाद ये मुमकिन है कि चार्ल्स सोबराज को फ्रांस वापस भेज दिया जाए। हमने चार्ल्स सोबराज के वकील से भी बात की है, गोपाल शिवकोटी, वो भी ये कह रहे हैं कि उसका जो अंदर एटीट्यूड रहा है, जो उसने काम किया है जेल में, उसे जो काम दिया गया, जो आश्रय रहा है, वो बहुत अच्छा रहा है। इसीलिए 20 साल की सजा जो मिली थी उसे 18 साल की सजा पूरी करने के बाद, 75% सजा पूरी करने के बाद 25% छूट के साथ उसे अब कल ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश दे दिया था। यानी कि जेल से तो रिहा हो चुका है अब, लेकिन ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पर है कब उसके पेपर पूरे होते हैं और कब उसे वापस फ्रांस भेजा जाता है। लेकिन अब इसके बाद ये भी सवाल है कि क्या फ्रांस जाने के बाद उसके प्रत्यार्पण के लिए और दूसरे देश भी कोशिश करेंगे? वो देश जहां पर इसके खिलाफ मामले चल रहे हैं, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो वियतनाम हो, टर्की हो, इन सभी जगहों पर उसके खिलाफ बहुत सारे मामले चल रहे हैं और इसीलिए अब ये कोशिश रहेगी उन लोगों की भी कि इसके प्रत्यार्पण के लिए अब फ्रांस से ये कोशिश की जाए कि वापस इसे लेकर उन जगहों पर जाया जाए जहां पर इसने इतने सारे जुर्म किए हैं और उसी मामले में इससे अब आगे पूछताछ होगी। हालांकि बहुत लंबी सजा चार्ल्स सोबराज काट चुका है, 78 साल की उम्र, और जिस गाड़ी में उसको लेकर जाया गया, जिस वक्त उसको लेकर जा रहे थे, उस वक्त भी हमने चार्ल्स सोबराज का चेहरा देखा था।
चेहरा बिल्कुल जो चार्ल्स सोबराज 70 के समय में था, 70 के समय में था, आज वो सोबराज नहीं रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस आज भी है। वो शातिर, वो मास्टरमाइंड जिसने इतने मर्डर किए, इतनी महिलाओं के मर्डर किए, जिसने ड्रग्स से लेकर दूसरे कामों में भी, दूसरे नंबर 2 के कामों में उसका हाथ रहा, उन सभी आरोपों में उस पर, चाहे वो बाहर दूसरे देशों में हो या फिर इंडिया में जिस तरह से उसने सजा काटी है, उन सभी चीजों को लेकर उसके चेहरे पर आज ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। बीच में बैठा हुआ था चार्ल्स सोबराज, चारों तरफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, उससे कोई भी बातचीत नहीं की जा सकती थी। फिर भी हमने कोशिश की कि हम उससे जानने की कोशिश करें, एक आधे शब्द या कोई जवाब मिल सके चार्ल्स सोबराज की ओर से, वो कुछ बता सके कि जेल के अंदर जो कुछ हुआ वो क्या था, वो जिस अच्छे आचरण की दुहाई दे रहा था वो अच्छा आचरण क्या रहा है। फ्रांस जाने के बाद, अगर वो फ्रांस जाता है यहाँ से, जैसा कि कहा जा रहा है कि सीधे फ्रांस ही भेजा जाएगा, तो उसके बाद उसका क्या चाल चलन रहेगा, आगे वो किस तरह से अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा, ये सब हम उससे जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल चार्ल्स सोबराज इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास ही रहेगा अगले 4 से 5 दिन। Anamika, what we were also hearing is that he's ill and he needs a surgery, and there are reports that seem to suggest that he's asked for a particular hospital in Kathmandu where he wants to be treated. So anything that you can share with us on that aspect? हाँ, हमारे उनके वकील से बात हुई, उन्होंने कहा है कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, उसका लेकर चेकअप भी हो चुका है। फिलहाल कोई भी सर्जरी या किसी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट कम से कम काठमांडू में नहीं होगा, जो भी होगा वो फ्रांस में ही होगा। इसके पहले कुछ ट्रीटमेंट जरूर हुए हैं और इसी वजह से उन ट्रीटमेंट को लेके उसका मेडिकल प्रॉपर कराया गया है और उस मेडिकल के बाद उसको अब वापस फ्रांस भेजने की तैयारी हो रही है। तो मेडिकल चेकअप जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो तमाम मेडिकल चेकअप हो चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिहाई के लिए, कल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था उसकी रिहाई के लिए, उसके बाद ही उसका मेडिकल हो गया था, पूरी तरह से फिट है, ये भी बताया जा रहा है। हमने उनके वकील से भी बात की, उनके वकील ये कहना है पूरी तरह से फिट है। पहले ऐसी खबरें भी थी नुपुर कि शायद ये मांग की गई थी चार्ल्स सोबराज और उनके वकील की ओर से भी कि उनको एक अलग होटल में रखा जाए। ये भी बातें कही गई थी कि पूरा एक होटल बुक किया गया था 5 स्टार, उसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था, जहां कोई भी नहीं आ जा सके, लेकिन किसी तरह का कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट कम से कम काठमांडू में उसको नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मेडिकल कराने के बाद जिस तरह से एक आरोपी होता है, एक अपराधी होता है, एक दोषी होता है, उसी तरह का व्यवहार करते हुए उसे यहां से लेकर गए हैं। सुबह से ही सबकी नजरें थी, हम भी लगातार नजर बनाए हुए थे कि कब यहां से चार्ल्स सोबराज को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट लेकर जाए, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि हो सकता है उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इतना शातिर अपराधी जिसे खुले नहीं छोड़ा जा सकता है, इसीलिए उसे पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट लेकर गए हैं। 5 दिन वहां रखेंगे, मेडिकल पूरा हो चुका है, पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके वकील ने खुद ये बात बोली है कि चार्ल्स सोबराज पूरी तरह से स्वस्थ है, 78 साल की उम्र में भी, तो अब सीधे वो फ्रांस ही जाएगा। All right, Anamika, of course, has managed to access those pictures that we are seeing right now on our screens of Charles Sobhraj being released from prison. What we know now is that he's been taken to the immigration department and is very, very likely to be extradited to France. To remember, he's a French national. In fact, Charles Sobhraj is responsible for multiple murders of young foreigners in the 1970s across Asia. He has been released from jail in Kathmandu. Still to come on Republic TV, Jagdish Titler is forced to withdraw from the Bharat Jodo Yatra. Republic is the only channel to confront him. And a crucial health ministers meeting is set to take place this afternoon. Guidelines may be issued for states. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special.
Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call 10 toll-free number 1-800-419-2020 now. एक दिन मैं सोते सोते गिर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है किसने किया? घोस्ट ने। वो हर बार मुझे बचा लेता है। मिलोगे? अरे कोई घोस्ट नहीं, रोनी के पापा ही हैं जो उसे सेफ रखते हैं। जैसे हैवेल्स लाइफ शील्ड वायर्स जो दिखते नहीं पर घर को सेफ रखते हैं। ना आग पकड़े न जहरीली गैस छोड़े। वायर्स दैट डोंट कैच फायर। বাহ, বাইরে সিকিউরিটি আর নিজের বাড়িতে এইসব। दादा बचा लिया आपने। बेफिक्र कोलकाता जाओ, इंटरव्यू अच्छा ही होगा। हर बंद राह ओपन हो सकती है, लगता है सिर्फ दिल। एक्सिस बैंक, दिल से ओपन। French killer Charles Sobhraj was ordered to be released from jail in Nepal because of poor health. In his first trip outside Ukraine since the Russian invasion, Zelensky lands in the United States. Biden welcomes him. 3 cases of Omicron subvariant BF7, a 2 case have been reported from Gujarat, while 1 case from Odisha. Top headlines at 12:30 after outrage, tainted titler forced to withdraw from Bharat Jode Yatra. Sir, Arwal.com digital platform. Just wanted to know one thing, sir. Sir, Why you want to know about me? I'm not participating. Simple as that. sir, you're not participating. Okay. Sir, what is the reason, sir? Why are you not participating? Tainted titler forced to withdraw from Bharat Jode Yatra, Republic only channel to confront titler. As Prime Minister bats for the mask mandate from national capital to Karnataka, India on COVID alert. Crucial health ministers meet with union health ministers meet with the state health ministers. Guidelines to be issued for the states. Bharat Biotech's nasal vaccine gets nod from the health ministry. Tamil Nadu BJP Vice President Sasikala Pushpa's car and house vandalized. BJP alleges DMK's role. Lodged in Kathmandu jail since 2003, linked to over 40 murders, bikini killer Charles Sobhraj to walk free. Thanks for tuning in this Friday afternoon. We start with breaking updates coming in on the COVID alarm that's been sounded by the centre. In fact, in the latest, the civil aviation has issued an advisory for the passengers, which says that random RT-PCR testing will be conducted at the entry of airports for those for the arriving international passengers. So random RT-PCR testing will be done of the incoming passengers from abroad. In fact, 2% of international passengers will undergo the testing. Those are some of the details that are just coming in. We'll go across to Harsha as well to get us some more details of this advisory that has been issued by the Aviation Ministry. Harsha, if you can take us through those guidelines that has been issued by the Aviation Ministry.
Yes, Samiksha, yesterday the meeting happened with the PM in which the Civil Aviation Ministry and Union Health Ministry both were there, and both of them are together fighting in this together regarding the passengers who are coming and who are going for international visit. Yesterday, advisory came from Civil Aviation Ministry which clearly stated that 2% of the random testing and sampling will be done of the international passengers. And today, Union Health Ministry in the off-camp briefing has exactly stated that the random RT-PCR test will be conducted when the passengers will be going for the international visit at the Terminal T3 of departure. At that time, the crew members of the airline will be there, and the crew members will select those 2 passengers or the 2% of passengers, and they will guide them towards the RT-PCR point where the random testing and sampling will be done, and the contact details and address will be taken, the sampling will be taken, and then the sample will be sent for the genome sequencing. The passengers, the travel will be made hassle-free. Only the RT-PCR will be conducted at the entry gate of the international airport, which is T3 departure gate. We have seen there are 16 gates at the international departure, and at all the gates there, the center of the random testing and sampling will be there. There is a queue, there will be a proper center point, and airlines crew member will all be there to guide the passengers who are going internationally. So in that, this will be a hassle-free travel for all the international passengers. And today itself, Union Health Minister in the off-camp briefing has also stated that. Samiksha, back to you. Yes, Harsha, stay with us. In fact, if you can talk to us more about this nasal vaccine that's been approved by the center. Anything known so far as far as the efficacy of the nasal vaccine is concerned? Exactly, Samisha. If we talk about the efficacy of this nasal vaccine, since the last year, all the study and the researchers were done on the nasal-free vaccine. It is basically the needle-free intranasal vaccine. So the 2 drops of the nasal vaccine will be put in the nostrils as a booster dose for those who are going to take the precautionary dose. And there's a needle-free vaccine. First of all, needle-free vaccine, 1 vial of Incovac, which is the nasal vaccine, come, and this 1 vial is used for 2 people. What we are being told, and the 2 drops are advised by the Union Health Ministry. The research and the study on this nasal vaccine was done last year only, and for the approval it went to the DCGI and the government panel, and today it has got the nod. So it is heterologous vaccine, and the efficacy of this vaccine, which is being told, is almost to the 80 to 90%. So this is, we are being told that the pricing only is one thing which is not decided yet. It will be decided by Bharat Biotech and the panel of government later by the evening. But today from onwards, on the COVID portal, the COVID portal app where all the vaccines are mentioned, in that portal from today onwards, nasal vaccine will also be added. So these are the updates we are getting in the context of nasal vaccine. Samiksha, back to you. Yes, Harsha, stay with us. Madhurima also getting us those updates on COVID from the national capital. Madhurima, all eyes will be on the Union Health Minister, who will also be holding a meet with the state health ministers. And also we're given to understand he'll be holding some mock drills as well coming Tuesday. Give us those updates. Well, yes, absolutely, Samiksha. A very crucial meeting will be held today in the afternoon at around 3:30, where the Union Health Minister Mansukh Mandavia will be meeting all the state health minister and chalking out a future strategy as far as the COVID contingency plan is concerned. What needs to be highlighted here is that Mandavia will be speaking for strict measures to make sure that during this festival season, the spread of COVID-19 is not curbed. Also, at the same time, mock drills will be conducted so as to check the efficacy and efficiency of these hospitals all across the country, where state health ministers will be conducting mock drills in their respective states, and in the national capital it will be the union minister himself who will be conducting these mock drills to make sure that the health infrastructure of our country is all ready to embrace if any battles comes their way. Now, if we talk about the multiple developments that have happened, like you were talking about the nasal vaccine as well, it was around a month back that this particular candidate of Bharat Biotech, it was November 28 to be precise, when this became the first heterogeneous vaccine that will be given, administered to the population of India. This is now the world's first vaccine, nasal vaccine, that can be
be administered over any other vaccine, no, even as a booster shot as well, like my colleague Harsha has been pointing out. Now we have to wait and watch with multiple indigenous candidates. The entire government and the health experts have been vouching for people to take the booster dose, because though 220 crore vaccinations have been given, the number of booster dose is relatively less as comparison to second dose. We have to wait and watch as to how this entire procedure is augmented by the government. All right, Madhurima, thank you for the moment. Harsha also reporting live from the national capital, getting us those updates. Of course, the latest one coming in that the civil aviation has issued an advisory for the passengers coming in from abroad. Moving on to more news break coming in, this one in relation to Charles Sobhraj, who's now walked free. Moving on to that big news break coming in from Nepal. All right, before we go across to our reporters in Kathmandu, but remember the advisory that's been issued by the civil aviation on the passengers coming in from abroad, where it states that there's going to be random RT-PCR testing which will take place at the airport. Not just this, simultaneously Union Health Minister will also be holding a meet with the state health ministers and also a mock drill that is planned on Tuesday, coming Tuesday, that will be conducted by the Union Health Minister at various hospitals. And more news break coming in on Charles Sobhraj, whose order copy has been accessed by Republic, which the order that's been passed by the Nepal Supreme Court. We'll go across to our Kathmandu reporters as well to get us more details, but the first pictures coming in right now of Sobhraj's release from the hospital, beg your pardon, from the jail. So, Charles Sobhraj, who's been convicted of several crimes, he was in fact sentenced to life imprisonment earlier. He's now walked free. Well, that's the exclusive still that we are putting out on our screens of Charles Sobhraj and the visuals there coming in from the jail. We'll go across to a reporter on the ground in Kathmandu to get us more details of the case. But remember, the court has ordered his release. He's a French serial killer, Charles Sobhraj. The Supreme Court in its order had stated that he'd been in jail for close to 2 decades on murder charges, and the court has now ordered his release. In fact, just to talk more about Sobhraj, who's 78 years old, a Frenchman of Indian and Vietnamese parentage, has been in jail for close to 2 decades on murder charges, and he's been convicted of several crimes. Called a bikini killer. In fact, he's now been... We are yet to get more details whether he's walked out of the jail or not, but those are the first visuals coming in right now of from the Kathmandu jail, and that's still as well of Charles Sobhraj. So we'll try and get more details on the case of Sobhraj, but let's take a closer look at those visuals coming in. वही बात कह रहे हैं, उनके वकील यही बात कह रहे हैं कि केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज भी अब इसके प्रत्यर्पण के लिए कोशिशें तेज करेंगी, क्योंकि इसने पहले भारत में सजा काटी, फिर ये नेपाल के कसीनो में पकड़ा गया। इसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये नेपाल में पकड़ा जा सकता है, लेकिन साल 2003 से लगातार चार्ल्स सोब्राज नेपाल की ही जेल में रहा है और उसके बाद दूसरे देशों में जहां इस पर मामले चल रहे हैं वहां पर जो आरोप है इस पर वहां पर अभी तक ना कोई पूछताछ हो सकी है, ना छानबीन कोई आगे बढ़ी है। इसीलिए फ्रांस के अलावा दूसरे देश भी जहां ये जा रहा है, जहां इसे भेजा जाएगा, वहां तो इससे पूछताछ होगी, जो मामले हैं उसको लेकर आगे और खुलासे होंगे। लेकिन और जगह थाईलैंड, टर्की, वियतनाम, इस्तांबुल जो और दूसरी कंट्रीज हैं वहां पर भी कोशिश ये होगी कि इसका प्रत्यर्पण की कोशिशें हो, जल्द से जल्द इसका प्रत्यर्पण हो सके जिससे इस पर मामले चला जाए। और सबसे ज्यादा कोशिश थाईलैंड की रहने वाली है, क्योंकि थाईलैंड में इस पर मर्डर का मामला चल रहा है। भारत में इसने लंबी सजा काटी, भारत में रहते हुए तिहाड़ जेल जैसी जो हाई सिक्योरिटी
जेल है उससे बड़ी आसानी से ये निकल जाता है। लेकिन उसके बाद क्या मंशा थी इसकी? यही कि इसकी भारत में ही सजा बढ़े जिससे थाईलैंड इसको वापस ना भेजा जा सके। तो क्या अब फ्रांस, क्योंकि ये फ्रांस का नागरिक है, तो क्या फ्रांस में ही इस पर जो मामले चलेंगे, क्योंकि उम्र भी बहुत ज्यादा है, 78 साल की उम्र है, तो क्या जो फ्रांस में मामले हैं इस पर फ्रांस में आगे मामले चलेंगे या फिर जो प्रत्यर्पण की कोशिशें दूसरे देशों की ओर से की जा सकती हैं, क्या उन कोशिशों के बाद दूसरे देशों को इसे सौंपा जा सकता है? इस पर सबकी नजरें रहेंगी। इसके वकील का कहना है कि थोड़ी देर के बाद पेपर सामने आ जाएगा। काठमांडू में क्या कुछ रहते हुए इसे कर रहा है कि नियमों को फॉलो करना है, जब तक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास है वो पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। रिहाई हो गई है लेकिन केंद्रीय जेल में अभी भी रखा जाएगा। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेपाल के कि चार्ल्स शोभराज को 15 दिन के भीतर उसे उसके देश में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है वो उसके पहले भी हो सकती है अनामिका। 5 दिन के अंदर हो सकती है। कोशिश यही है काठमांडू पुलिस की, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, कि 5 दिनों के भीतर ये शातिर अपराधी को वापस इसके देश भेज दिया जाए। क्योंकि नेपाल में रखना, क्योंकि जिस तरह से ये जेल तोड़ने में माहिर है, इसका दिमाग गोली से भी तेज चलता है, मास्टरमाइंड है अलग अलग मर्डर्स का, अलग अलग मामलों का। तो इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसको जल्द से जल्द ये कोशिश होगी कि फ्रांस वापस भेजा जाए, जिससे कि दूसरे मामले जो इस पर वहां पर चल रहे हैं, क्या उसमें इसकी गिरफ्तारी हो सकती है या केवल सिर्फ पूछताछ होगी, वो प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सके। तो काठमांडू पुलिस पूरी तरह से तैयार है। काठमांडू पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि इसे खुला नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद इसको फ्रांस भेज दिया जाएगा। और जैसा कि कहा गया है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कि 15 दिनों के भीतर इसको वापस भेज देना है। और कोशिश यही है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इसका जैसे पेपर वर्क पूरा होता है, जो पासपोर्ट इसका एक्सपायर हो चुका है या इसका वीजा नहीं है, जल्द से जल्द ये कोशिश की जाए। और ये भी मुमकिन है कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इसको रिहा कर दिया जाए, इसके आचरण को देखते हुए, इसके चाल चलन को देखते हुए, उसके बाद पेपर वर्क शुरू भी हो गया हो। बिल्कुल। अनामिका, एक और चीज समझना चाहेंगे, आप ग्राउंड पर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। लेकिन ये भी जानकारी थी कि रिहाई के जो ऑर्डर हैं वो 2 दिन पहले ही आ चुके थे, लेकिन जेल प्रशासन को कंफ्यूजन था, ये स्पष्ट नहीं था कि कौन से केस में ये रिहाई मिली है और मिली भी है या नहीं। ये क्या था, ये पूरा थोड़ा सिनेरियो आप बता पाएंगे? सवाल आपका प्रियंका बहुत साफ मेरे तक नहीं आ पाया है, लेकिन आपने सिनेरियो का जिक्र किया है कि क्या सिनेरियो रहा है और किन किन मामलों में इसको रिहाई मिली है। अब 20 साल की सजा इसको हुई थी, 18 साल की सजा पूरी कर ली है। तो कम से कम काठमांडू में जो मामले इसके खिलाफ थे, नेपाल में जो मामले इसके खिलाफ थे, उन सभी मामलों में इसकी रिहाई हो गई है। यानी कि वापस इसको अब काठमांडू नहीं आना है, ये तो तय है। लेकिन बाहर दूसरे देशों में, फ्रांस समेत जहां का ये रहने वाला है, फ्रांस समेत दूसरे देशों में इसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरी कोशिश सबसे पहले थाईलैंड की ये होगी कि थाईलैंड बिल्कुल अनामिका, आप इस खबर पर बनी हुई हैं, अपडेट के लिए लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां ड्रग तस्करी का मामला खुलकर All right, the big news break coming in this hour, getting in a confirmation that Charles Sobhraj has now been released. We are now given to understand that he's walked out of the jail and sent to immigration custody pending deportation. So that's the update coming in. We are now given to understand that he's walked out of the jail. This is the news break coming in from Kathmandu, Nepal. Of course, Anamika, they are getting us that live reports from Nepal as Sobhraj has walked out of the Nepal jail. And just to talk a little more about Charles Sobhraj, who spent 19 years in jail for the murder of 2 tourists in Kathmandu in 1975, has been ordered to return. In fact, he has been convicted of several crimes, including a string of other tourist murders in the 1970s as well, and spent almost 20 years in prison. His victims were mostly young Western backpackers in India and Thailand. In fact, the killer had been serving 2 life sentences, each 20 years, in Nepal for the murder of American women and Canadian backpacker friend of the American woman as well. So he was convicted in 2 separate trials, most recently in 2014, when he was sentenced to 20 years in a high security prison for murdering a woman. But Nepal's Supreme Court having ordered Sobhraj release after his legal team successfully filed a petition claiming he should be given a concession on his prison term. We have Anamika there reporting live from Kathmandu. Anamika, we're now given to understand that he's walked out of the jail. What is the latest that you're picking up?
जेल से वापस ले आए हैं, जेल से बाहर आ गया है, रिहाई हो चुकी है, लेकिन रिहाई उस तरह से नहीं हुई है कि ये शख्स रिहा होकर सड़कों पर घूमे या कहीं पर भी किसी से मिलने जा सकता है। मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस के बाहर हूँ इस वक्त, मेरे एक तस्वीर दिखाइएगा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस के बाहर हूँ और इसी के अंदर चार्ल्स शोभराज को रखा के ऑफिस के बाहर हूँ और इसी के अंदर चार्ल्स शोभराज को रखा गया है और अगले 4 से 5 दिनों तक, करीब अगले 4 से 5 दिनों तक चार्ल्स शोभराज यहीं रहेगा और 5 दिनों के भीतर मुमकिन है कि जल्द से जल्द इसको वापस फ्रांस भेज दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चाहती है नेपाल पुलिस कि एक ऐसा आरोपी, एक ऐसा अपराधी जो कि एक ऐसा शख्स जो कि इतना बड़ा अपराधी है, जो शातिर अपराधी है, वो यहाँ काठमांडू में रहे, नेपाल में रहे। इसीलिए जो है उसको यहाँ नहीं रखा जाएगा। मेरे साथ इस वक्त वाइफ हैं चार्ल्स शोभराज की, मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करूंगी। निकिता उनकी वाइफ भी इस वक्त देखिए बाहर मौजूद हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के, लेकिन वो अभी बात नहीं करना चाहती हैं। काफी देर से वो यहाँ पर हैं, हम लगातार उनसे कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे बात कर सके, लेकिन तस्वीर दिखाइएगा विवेक, उनके वकील और उनकी वाइफ इस वक्त इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के बाहर ही है। वो चाहते हैं कि वो एक बार मिल लें। निकिता अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके वकील मिलना चाहते हैं, बातचीत करने के लिए, ये जानना और समझना चाहते हैं कि अंदर क्या कुछ हुआ है, आगे पेपर वर्क कैसे बढ़ाया जाए, कानूनी मदद से कैसे आगे वापस इसको फ्रांस वापस भेजने की तैयारी की जाए। लेकिन उनकी वाइफ निकिता जो इस वक्त आपको तस्वीर में दिख रही हैं, वो बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। इसके पहले जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी तब भी उन्होंने इनकार कर दिया था। खैर, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स शोभराज की, जिसको 4 से 5 दिनों में वापस फ्रांस भेज दिया जाएगा। लेकिन क्या चार्ल्स शोभराज अपनी फैमिली के साथ जाएगा वापस, ये भी सवाल है। और अंदर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की कस्टडी में है, तो क्या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कुछ और, हालांकि इस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का ये काम है कि जल्द से जल्द इसके पेपर वर्क कराए जाएं, जल्दी से जल्द इसका काम, जो पासपोर्ट है इसका जो एक्सपायर हो चुका है वो पासपोर्ट, और इसका वीजा वीजा दिलाया जाए, जिससे कि ये फ्रांस वापस जा सके। लेकिन फ्रांस जाने के बाद क्या इस पर और मामले आगे चलेंगे, क्योंकि फ्रांस में भी इस पर कई मामले हैं, फ्रांस में भी अलग अलग मामलों में ये आरोपी है और वहां पर भी इस पर मामले चल सकते हैं। दूसरे अलग अलग देशों में 9 देशों में इस पर मामले चल रहे हैं, तो और 9 देश की पुलिस चाहती है कि वो इसका हैंडओवर ले और दूसरे मामले जो दूसरे देशों में इस पर चल रहे हैं उनसे पूछताछ हो सके। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ कि बात करूं। निकिता अभी कुछ कह रही हैं। All right, so the live visuals there coming in from Kathmandu as Charles Sobhraj has walked out of jail. Remember, he'd been serving 2 life sentences each, nearly 2 years, and he's been convicted of several crimes, in fact 2 separate trials, most recently in 2014 when he was sentenced to 20 years in a high security prison in Kathmandu. Latest, of course, the Nepal Supreme Court having ordered his release, and with this Charles Sobhraj has now walked out of jail. Anamika, of course, continues to be with us. Anamika, what is the next move that we can expect with Charles?